Hello kids, how are you all? So yesterday we had studied about ISP and net surfing. Yes, I had explained you that what is ISP. The full form of ISP is Internet Service Providers. Then I had explained you about some Internet Service Provider examples. Yes, the companies who provide you internet service, जो companies आपको internet service देती है, we have discussed about some companies. Then we have studied about net surfing. What is net surfing? Yes, I had explained you the act of searching World Wide Web from one link to another link and without having any planned strategy. मतलब आपने कुछ plan नहीं किया था and you are just searching for the information. तो आप informations के लिए search कर रहे हो from one link to another link. This is known as your net surfing. Yes. Now today we are going to study about the next topic, that is your search engines. Now what is this search engines? Okay. So before starting with the search engines, I want to ask you something. Suppose you need to, all of you are having your book, all of you have seen your book, आप सबने अपनी books देखी होगी. Now for finding a particular chapter or you can say find a particular page, what do you recommend? आप क्या recommend करते हो? Suppose आपको कोई किसी book है, new book which is very new to you, आपके लिए बिल्कुल नई है वो, and to find a particular chapter, आपको कोई एक chapter चाहिए, वो chapter find out करने के लिए आप क्या करते हो? You will take the help of your index book. आप अपने index की help लेते हो. Yes. With the help of the index, आप index की help से you will find the page number and directly open that page. आप वो page number open करोगे, मतलब पहले आप find out करोगे and then you will directly open to that page. आप वो page open कर लोगे. Yes. Similarly, for finding any information on the internet, search engines help us. Search engines हमें कोई भी information अगर आपको internet पे चाहिए तो आपकी वो help search engines करते हैं. Okay. Word to the. Okay. Now what is a search engine? A search engine is a software, you can say, that searches for various web pages on the world wide web to find a particular information. आपके जो search engines हैं ये एक software है and it helps you to find the various web pages. आपको ये link की help से various web pages find out करते हैं ताकि आप अपनी information internet में जो भी आपको information चाहिए you can reach to that information. Clear? नाउ फॉर दैट पर्पस यू नीड अ पर्टिकुलर कीवर्ड. आपको एक कीवर्ड चाहिए, आप जिससे भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करना है उसका आपको एक कीवर्ड पता होना चाहिए. लाइक सपोज यू वांट टू फाइंड द एंटोनिम एंड सिनोनिम्स, आपको एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है. सो राइट दैट एंटोनिम वर्ड देयर, आप एंटोनिम वर्ड एंटर करो वहाँ पे एंड देन यू विल गेट द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंटोनिम्स. आपको जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी आपकी वर्ल्ड वाइड वेब पे, इंटरनेट पे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी वहाँ पे. क्लियर? एंड इट ऑल्सो डिस्प्लेज द, आपने एंटर किया वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई एंड उसके साथ इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इट ऑल्सो डिस्प्लेज द लिंक ऑफ अदर वेबसाइट. और भी वेबसाइट्स के लिंक आपको प्रोवाइड करता है सो दैट यू कैन रीच दोज वेबसाइट्स एंड गेट द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन विच यू वांट. जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप वो वेबसाइट पे जाके इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सको. ओके. So this much I had explained you about the search engines. Now what are the examples of search engines? See, Google, Bing, Yahoo, these are your some search engines. Now next is to find information on the search engine. How will you find information on the search engines? So let me show it to you on the screen itself. So now I had explained you that what is search engine. Now next is to find the search engines. First you need to connect your laptop or you can say your computer system with the internet. Now my laptop is already connected with the internet. Now let's open a web browser. See, here I am using your Google Chrome. So just open it. Then after opening your web browser you have to use a search engine. So here I am using Google. Okay, Google is your search engine, all of you know that. Now whatever थिंग यू नीड टू सर्च, जो भी चीज़ें आपको सर्च करनी है यू हैव टू टाइप द कीवर्ड हियर. आपको यहाँ पे गूगल के यहाँ पे सर्च बॉक्स में यू हैव टू टाइप द यू हैव टू टाइप द कीवर्ड हियर. सपोज आई वांट टू टाइप द ग्लोब. in your book it is written Cartoon Network but I want to search about the globe. So after typing the keyword in your search box just press the enter key and you will find, आप देखोगे that you have got a related informations and a list of websites which contains the relevant information. आप देखो यहाँ पे ग्लोब से related जितनी भी different websites हैं यहाँ पे open हो गई हैं and
इन सब में आप देखो आपकी ग्लोब से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी. ओके, देन images is also given here. Shopping, if you want to shop for the globe, maps, videos and some more things are there. Now just scroll it and see. आप देखो इसको, how many different websites are here. Okay, now choose any of the website which you find relevant to you. जो भी आपको relevant लगे, इसमें से आप कोई भी वेबसाइट चूज़ कर लो जिसको आपको लगे कि हाँ इससे मुझे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल सकती है. सपोज आई एम चूजिंग दिस वन. Click on it and the home page of that website will be open on your screen. So now clear how will you find any information with the help of your search engines? Clear? So today we have studied about search engine. Now tomorrow we are going to start with the next topic, that is basic requirements for an internet connection. Okay, so please revise these things. Revise your last topic, that is search engines, from your page number 93. So this much for today. Thank you.